स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 17। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, who can order for carrying out inspection and under what circumstances? Inspection, okay, और रीड करना पड़ेगा. Inspection can be carried out by officer of CGST, SGST only upon a written authorization given by officer of a rank of JC or above. JC or an higher officer can give authorization only if he has reasons to believe that person concerned has done any of following: suppressed any transaction, suppressed stock of goods in hand, claimed excess ITC, contravened any provisions to weight tax. A transporter or warehouser, godown, or any other place has kept goods which have escaped payment of tax or has kept accounts or goods in a manner that is likely to cause evasion of tax. Okay, 5 points है यहाँ पर. And then who can order and under what circumstances? So JC can order, an officer of the rank of JC or above can order, and if he has reasons to believe. और ऑफिसर ऑफ GST कर सकता है GST या SGST, और रिटर्न ऑथराइजेशन होना चाहिए JC और अबव ऑफिसर का. ओके, inspection can be carried out by officer of CGST or SGST upon a officer of CGST or SGST upon written authorization of officer of rank of GC or above. GC or above rank officer can authorize if they have reasons. To believe that person concerned has done any of following. Then we have 5 things. 1, suppressed any transaction, suppress stock of goods in hand, suppressed JC or officer reasons to believe, suppressed claimed excess ITC, any transaction of supply, stock transaction ITC,
stock transaction, ITC, contravention यहाँ पर contravent, any provision of CGST Act to evade tax, transporter or owner or operator of warehouse or godown has kept goods that has escaped tax payment. Tax payment or has kept his accounts of goods in a manner likely to cause tax evasion. Transport owner or operator escaped tax payment, kept goods payment likely to cause tax evasion. Contravent. Contravent. 2. Who can order for search and seizure? पहले इंस्पेक्शन था, इसके लिए ऑथराइजेशन चाहिए जेसी और अबव का, और इसको कौन सकता है carried out by an officer of CGST or SGST only upon return authorization. Search and seizure. Officer of rank of JC or above, ये भी वही JC or above, can authorize in writing search and seizure of goods or documents, books or things. Such authorization can be given only where JC or officer above. यहाँ पे भी reasons to believe चाहिए. And goods liable to confiscation or any documents or books or things or any person are hidden in any place. JC or above rank officer can himself search and seize. Okay, यहाँ पे खुद कर सकता है, खुद भी कर सकता है, ठीक है. An officer of rank of JC or above can authorize an JC or authorize an officer in writing to carry out search and seizure of goods, books or things. अच्छा, search and seizure के लिए authorization है in writing. Such authorization can be given only where JC or above rank officer has reasons to believe that goods liable to confiscation
any important documents or books or things are hidden in any place. The JC or above rank officer can himself search and seize such goods, documents, or books or things. Reasons to believe goods liable to confiscation or documents, books, or things hidden. Okay. Next, what is search warrant and who is competent authority to issue search warrant? Okay, search warrant पहले inspection, फिर सर्च एंड सीजर का ही था, बट यहाँ पर अब सर्च वारंट कौन इशू कर सकता है, व्हाट इज सर्च वारंट, एंड देन व्हाट डिटेल्स शुड बी कंटेन्ड इन अ सर्च वारंट. ओके, डिटेल्स क्या है और सर्च वारंट होता क्या है. अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. अथॉरिटी तो आई गेस जेसी या फिर ऑफिसर अबव जेसी रैंक वही होगा सर्च के लिए, जो सर्च एंड सीजर के ऊपर पड़ा था, राइट. तो यहाँ पर अपने पास है search warrant with an authority to conduct search with authority. ओके, जो रिटन ऑथोराइजेशन देता है जेसी या अबव रैंक वाला, वो उसको सर्च वारंट ही बोलते होंगे फिर, राइट. ओके, ओके, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जेसी और अबव रैंक. और व्हाट डिटेल्स, आई गेस कहाँ पर सर्च करना है और क्यों सर्च करना है, रीजंस टू सर्च. Reasonable belief. Search warrant may indicate existence of reasonable belief leading to search. हाँ, मतलब रीजन टू बिलीव होना को इंडिकेट करना है. कंटेंट्स यहाँ पर वायोलेशन क्या हुआ है, वायोलेशन अंडर जीएसटी लॉ. हाँ, जगह जहाँ पे सर्च करना है, प्रिमाइस टू बी सर्च्ड. हाँ, कौन कर रहा है, नेम एंड डेजिग्नेशन of person authorized, name of issuing officer, with full designation.
along with round seal. Okay. Violation क्या हुआ है? Premise to be searched. Person authorized. Issuing officer. Round seal. Date and place of issue. Serial number of warrant. Period of validity of warrant. Right. Date and place. Question number 4. Powers that can be exercised by an officer during a valid search. Okay, सर्च करने गया है तो गैस बुक्स वगैरह सर्च कर सकता होगा, ब्रेक थ्रू कर सकता होगा, डोर्स को, कंप्यूटर लैपटॉप्स का पासवर्ड ले सकता होगा, यस उसको सर्च कर सकता होगा, और अगर ना दें तो फिर सील कर सकता होगा. Let's say an officer carrying out search has the power to search for and seize goods. First power है power to search for and seize goods and documents, books or things. From premises searched. Next, power to break open the door of relevant premises. If access denied. It's denied. Break open any almirah or box if access to such almirah or box is denied, and in which goods or documents or books are suspected to be concealed. हाँ, लाइक ऐसे कुछ भी तोड़ते फोड़ते रहना है जिसमें सस्पेक्शन हो, जिसका थोड़ा शक हो, उस वाली अलमीरा को या बॉक्स को ब्रेक ओपन करना. Open the door. Access to same is denied. Power to search and seize of almirah or box. Or he can also seal premises if access to it denied.
सील प्रोमिसेस पहले ब्रेक ओपन कर सकता है अगर वो उसको एंट्री नहीं दे रहे तो, और फिर ब्रेक ओपन कर सकते किसी अलमीरा को या बॉक्स को जो कि जिसके अंदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सील हो, डॉक्यूमेंट्स गुड्स या फिर अकाउंट्स कंसील्ड हो, और हाउ टू सर्च एंड सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बुक्स और गुड्स फ्रॉम प्रोमाइसेस सर्च और सील प्रोमाइसेस एक्सेस डिनाइड, सील भी कर सकता है और ब्रेक ओपन भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, ट्वेल्व क्वेश्चंस इन टोटल। क्वेश्चन नंबर 5, सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड इन सेक्शन 67 है अपना सर्च एंड सीजर वाला ना, एक सेकंड, नहीं सेक्शन 67 है इंस्पेक्शन का। अच्छा, इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर तीनों का ही है। ओके, तो सेफगार्ड्स क्या है इन रिस्पेक्ट ऑफ द पावर ऑफ सर्च और सीजर, सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पावर ऑफ सर्च एंड सीजर। ये सेफगार्ड्स किसके लिए होंगे? ये आई थिंक क्लाइंट्स के, जो मतलब पर्सन फंसे हैं उस चीज़ में, आई गेस उनके लिए होना चाहिए। सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड इन सेक्शन 67 के इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर तीनों ही आ जाता है सेक्शन 67 में, वो उसके सेफगार्ड्स हैं। Seized documents or goods should not be retained beyond period necessary for their examination. Okay. Photocopies, extracts of the documents can be taken by the person. Okay, सबसे पहले seized documents cannot be retained beyond period necessary. Photocopies or extracts of documents can be taken by the person from whose custody goods are seized. Can be taken. Okay, वो person रख सकता है photocopies और extracts. Documents can be taken by the person. Okay. Seized goods where notice is not issued within 6 months, extendable for further 6 months of their seizure, goods shall be returned to the person from whose possession they were seized. Okay. Inventory of seized goods is required to be made by the, okay, inventory बनाना है. Okay. क्या क्या लिए? Certain specified categories of goods such as perishable hazardous can be disposed of immediately after seizure. ओके, ये सेफगार्ड सबके लिए ही है आई गेस, डिपार्टमेंट का भी आ गया है और हमारा भी आ गया है। एंड लास्ट पॉइंट इज searches and seizures can be carried out in accordance with the provisions of Code of Criminal Procedures. Okay. Instead of sending copies of any record made in the course of search to nearest magistrate, it has to be sent to the principal commissioner or commissioner of JSU. Search and seizure shall be carried out in accordance with provisions of Code of Criminal Procedure.